हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कास्ट एंड क्लास के रिलेशनशिप को पढ़े थे या डिस्कस किए थे, और जजमानी सिस्टम को भी डिस्कस किए थे विद रिस्पेक्ट टू द कास्ट। टुडे विल डिस्कस विद द कास्ट रिलेशनशिप विद पॉलिटिक्स। अगर जाति व्यवस्था को और भारतीय राजनीति को हम लोग देखते हैं, so always you find a strong relationship that how caste and politics cannot be separated from Indian society। तो भारतीय समाज में जाति और राजनीति के बीच में जो संबंध है, it's a strong relationship. Today also you find, yesterday also it was there, and tomorrow you may find, or there can be years to come to understand why caste became an important dimension to understand Indian politics। जब आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारे स्टडी पढ़े होंगे। सो एन श्रीनिवास हो, रजनी कोठारी हो, दोज आर पीपल दोज हु हैव वर्कड ऑन। तो जाति और राजनीति के जो संबंध है, you can understand the current contemporary election issues during the debate in our TV channel. There are a lot of experts from different caste group. They join in the political debate, how their position is important to understand Indian society. That how the caste became a dominant factor to understand the Indian politics or political structure of Indian society. जब हम डोमिनेंट कास्ट पढ़ते थे एम श्रीनिवास की, दैट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एक डोमिनेंट कास्ट में है, सो दैट एक्सप्लेन्स दैट इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जब आपके पास एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है तो आपके जो एक्सरसाइज है पॉलिटिकल और वोटिंग राइट्स, दैट गिव्स स्ट्रेंथ द लोकल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो वोटिंग बिहेवियर आपके पास है, आपकी स्ट्रेंथ जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, so that gives a dimension that how the Indian political structure, starting from panchayat, gram panchayat to a larger parliamentary democracy, that caste became an important aspect। तो जो political dominance हमारे Indian society को आप देखेंगे, you find almost north and south and to some extent eastern part and also in western part, we find that caste is always an important factor to understand Indian politics during election, before elections, and how there is a political exercise is based on the caste dynamics of Indian society। तो आपकी कास्ट को लेके जो डायनामिक्स है, वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यू रीड एनी बुक रिलेटेड टू दैट हाउ कास्ट हैज बीन अंडरस्टूड। अभी हम लोग रिसेंटली एक बुक बाय सुधा पाई, मोदी, Maya, Modi and Azad, that also gives a significant aspect of caste in Indian politics by looking at the modern scenario। And you go back the earlier age also, जब हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जो इमरजेंस हुआ, कास्ट के फॉर्म में भी हुआ है। वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ न्यू कास्ट जो हमारे वेस्टर्न यूपी से लेके हरियाणा, पंजाब, इवन इन राजस्थान। सो देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल parties emerged out of the caste structure, and it is a strong relationship cutting across different caste group. It can be higher caste, it can be lower caste. So there is a strong relationship with political power and the caste dynamics। तो जितने भी समाजशास्त्री अगर इसको डीपली जो गांव के या जो पॉलिटिकल पावर को ग्रासरूट लेवल पे देखे हैं या पढ़े हैं या रिसर्च किए हैं, तो इन्होंने कास्ट के एक इम्पोर्टेंट रोल को दे आर अनेबल टू डिनाई दैट। सो दिस सिस्टम लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और जिसमें अडल्ट फ्रांचाइज जो वोट देने का अधिकार, और जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पार्लियामेंट टू पंचायत तक, जो एक ग्रासरूट लेवल तक जो पॉलिटिकल स्पेस है, उस स्पेस में हमेशा कास्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दैट मीन्स अगर आप कास्ट की इक्वेशन को नहीं समझ पाएंगे, सो पॉलिटिकल पार्टी की विनिंग या डिफीटिंग स्थिति को आप देख नहीं सकते। So that means caste coalition is also an important dimension to get the ticket, to get the vote, to find a ticket, to represent your community, to represent your village, to represent your constituents। तो अगर आपकी एरिया में आपकी
कास्ट की नंबर, कास्ट की डोमिनेंसी के आधार पर अगर आप ये परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, सो पॉलिटिकल पार्टी भी उस हार जीत को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. सो दैट मीन्स the political parties, the political equations also has a strong relationship with your caste dimension in that particular geographical area. तो ये जो कास्ट को पॉलिटिक्स के माध्यम से जब पॉलिटिक्स देखते हैं तो कास्ट और जिंदा हो जाता है. जिंदा मतलब इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट. ये एक इम्पोर्टेंट विजिबल पॉलिटिक्स को क्रिएट कर रहा है, जो कैसे कास्ट हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बिहेवियर को या वोटिंग बिहेवियर को या फ्रेंचाइज राइट्स को. सो दैट बिकम्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे यू गेट फ्रॉम द रजनी कोठारीज. जब आप कास्ट और पॉलिटिक्स कल की रोल को इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को देखेंगे, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. दिस इज वन ऑफ द most important book written by Rajni Kothari to understand the relationship between caste and Indian politics. That how caste mobilize, how caste relationship with welfare, reservation, social status, caste alliances, caste coalitions. तो ये जो पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर कास्ट की इक्वेशन से जुड़ा हुआ, that became an understand major factor to understand Indian politics. तो अभी भी जो हम अगर जब भी पॉलिटिक्स या कभी इलेक्शन की बात करते हैं तो हमें सही के एक्सपर्ट हमारे पास एक सोशल साइंटिस्ट या कोई जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमेशा कास्ट को एक इम्पोर्टेंट आधार मानते हैं. आपने किसको टिकट दिया, उस एरिया में कौन टिकट को हकदार है, अगर किसको देंगे तो हम जीतेंगे. फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाउ डू दे डिस्ट्रीब्यूट देयर टिकट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट प्रोमिनेंस और कास्ट सेंसस. तो ये जो कास्ट की जो गणना लीडर के पास है, लोकल लोगों के पास है, और उसी बेसिस पे टिकट देना या वोट पाना, ये जो समीकरण है, ये जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. तो हम लोग हमेशा जो कहते हैं जाति कभी नहीं जाती, इट इज कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स. टिल टुडे हम लोग आज भी जो 21st सेंचुरी कहते हैं या एक मोस्ट डेवलप्ड वे में हम डेमोक्रेसी को देखते हैं टेक्नोलॉजी से जोड़ के, और ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट को आज देख रहे हैं, या उस तरीके की आज एक डेवलप्ड सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हैं. बट उस जगह पे कास्ट अभी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड दैट इज the way that many political scientists, social scientists, sociologists, they understood that caste has been an important, strong factor who takes the significant role to mobilize, to get votes, to distribute the tickets, and that cannot be uh, means marginalized. तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जाना, पावर के साथ जोड़ के हर जगह पे हम लोग कास्ट को एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं. If you find that how the local political people, they first count their castes. So caste counts, caste matters, caste gives, caste takes, caste allows, caste suffers. तो ये जो कास्ट से जुड़ी हुई सारी बातें हमारी पॉलिटिकल स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है. And if you take an ideal, if you want to create an ideal state or ideal democracy, then you have to disassociate, then you have to separate the caste part in Indian politics. And that is where you find that caste became an important aspect of Indian politics. Thank you so much for watching Dhal Sir classes.